Welcome to my channel ICAI Gayatris Education, and today we are going to study business economics, and the topic which we are going to deal with today is the effects of consumer behavior on the market. Right, let's begin. Okay, first we will understand what is the consumer behavior and how does it affect the market. Market में demand, supply, its production, everything is dependent upon the behavior of the consumer, who are the actual consumer, who are actually buying the products or getting the services from the sellers, right? So the consumer behavior affects the market to a large extent. Let's study in details what they given. Consumer behavior refers to the study of individuals or groups and the processes they use to select, secure, use and dispose of products, services, experiences or ideas to satisfy their needs and desires. Okay, what does it mean? इसका बोलने का मतलब है कि हम जो consumers है who are consuming the goods or getting the services, तो उनके use पे how they are liking a product, how their needs and wants are satisfied, ठीक है, उनके desires कैसे complete हो रहे हैं या satisfaction position वो लोग पहुँच रहे हैं कि उनके जो needs है wants है वो satisfy हो रहे हैं कि नहीं वो product use करके, and the way they are using it and in what proportion they are using it, everything, their experience and their ideas how to get more satisfaction, everything affects the market, right? It involves various factors like cultural influences, social factors, personal motivations, and so हम क्या factors जैसे cultural influences. Okay, in a particular place where there is a lot of religious festivals taking place, so according to the religious festivals people will like to adapt to those changes, and they will want, their desires will be to buy those products which will be according to those festivals, right? Then we get social factors. Some people think buying a particular product is more better than the other. That will affect social factors of people. Just like want to buy something luxurious materials, in those areas luxury materials will be everything is social factor. Then personal motivations, and when just products which are used by people who are the product which is based on the will of the person's desires. If the person is maybe a expert in yoga and all these things, then he will be going to buy those products more than those products which is not required. Then education also, the level of literacy, the books will be sold. And like this the market is influenced by the consumers who are who are going to use those products which is produced by the sellers, right? So psychological influence also, if for a particular brand we have some weakness, so we will go to buy those products, okay, that shape how the consumers make decisions in the marketplace. Okay, understanding consumer behavior is crucial for businesses to develop effective marketing strategies. Yes, जो market में जो जिसको रहना है, जिस seller को market में रहना है या जिस manufacturer को रहना है, उसको consumer का जो behavior उसको पहले पहचानना है, तो understand what the consumers want, whether they are able to satisfy those needs or not, what is the trend which is going on, what is the people more likely to buy. अभी जैसे कि healthy foods ज़्यादा people like करना शुरू किए हैं, तो they are switching off from white rice to brown rice, and again this use of those millets and grains have come into vogue because people are buying, and so more and more industries are focusing into those areas which are getting a boost, right? So we can see the market is growing with the demand which the consumer setting, right? Not only demand, also the use, the way and how they are being processed, everything is focused. So the businesses who want to develop effectively and make strategic planning of their business have to understand the consumer behavior to have a stand in the market or to face the competition, right? Consumer behavior significantly impacts the market in various ways. Here are some key effects. So what we will see how the consumer behavior is affecting demand and supply, right? Consumer preferences and buying pattern influence the demand for specific products or services. Okay, consumer जो prefer कर रहे हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, उनका buying pattern, कितने amount पे खरीदना चाहते हैं, कितना उनका use हो रहा है, that is going to define the demand for a particular product or specific product.
or the services they are willing to have. Okay, high demand can lead to increased production and market growth, right? While declining demand may result in saturation or demand decline. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जब उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, कंज्यूमर्स आर बाइंग मोर ऑफ दैट. अगर कंज्यूमर्स उसका डिमांड, अगर कंज्यूमर्स खरीद नहीं रहे तो उसका डिमांड कमेगा, राइट? एंड इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम डिक्रीज एंड देन एट अ पॉइंट इट विल नॉट बी सोल्ड, सो इट विल रीच अ सैचुरेशन पॉइंट, वी कैन सी. Okay, so demand and supply is directly related with the consumer behavior. The more the consumer is buying a particular product or taking the service of particular thing, so that time that demand is increasing, and that product or that product's demand is increasing, so the market has to respond according to the demand of the consumers, right? And supply the products so that their business goes ahead and makes a profit, right? Market trends. Okay, सेकेंड है, फर्स्ट हमने क्या, डिमांड एंड सप्लाई. नाउ मार्केट ट्रेंड्स. कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स शेप मार्केट ट्रेंड्स, राइट? अभी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो ही डिवाइड करता है व्हाट इज द ट्रेंड्स. पहले जैसे कि अब देख रहे हो बहुत से ड्रेसिंग स्टाइल में, नाउ अगेन वी कैन सी इंडियन कल्चर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैव कम अप. Okay, so it's a trend which is mix and match, and we can see what are the people are wearing, what people are liking. वो ही मार्केट का ट्रेंड सेट कर रहा है. इट्स नॉट कि मार्केट ट्रेंड को एक चलो एक पर्टिकुलर किसी ने बोला कि यू हैव टू वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस एंड एवरीबडी इज वेयरिंग. नो, नॉट लाइक दैट. इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड विच द पीपल आर सेटिंग, विच द पीपल आर लाइकिंग, राइट? So consumers are setting the trend and the market is responding to the trend of the consumers. Business adapt their strategies based on consumer preferences, leading to the introduction of new products, changes in marketing approaches and shifts in new industry trends, right? अभी हमारा ऑनलाइन मार्केट्स आ गया, तो अभी बहुत लोग, पीपल डोंट लाइक टू गो टू द मार्केट्स एंड जस्ट बाय दोज थिंग्स. दे जस्ट गेट सेट इन द हाउस एंड ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स एंड गेट इट ऑनलाइन. एंड इवन सो द मार्केट्स, the sellers are increasing their market by through online business only. So the marketing approaches, okay, also that is also decided by the consumers. So we can say the consumers setting the market trends according to which the market has to respond in order to stay in the competitive world, right? Then we have the product development. Understanding consumer needs and desires guides businesses in creating products or services that align with market demand. What is the demand of the product? According to the thing, the sellers have to produce the goods or make the goods as per the needs and desires of the consumers. Consumer जैसा चाहता है वैसे ही बनाना है उस प्रोडक्ट को, ठीक है? Innovations and improvements often stem from consumer insights, enhancing the overall competitiveness of the market. Okay. पहले कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में हम लॉन्च करेंगे, नया सेलर लॉन्च कर रहा है, तो ही इज शी मस्ट थिंक कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, राइट? बट इफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करने के आगे हम अगर मार्केट सर्वे कर लेंगे कि मार्केट में डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन विच वी आर गोइंग टू लॉन्च है, अगर हम देखें उसका मार्केट का डिमांड ज़्यादा है, पीपल आर वांटिंग इट, वी कैन टेक द, वी मीन्स आइदर टू से द सेलर्स कैन टेक द सर्वे ऑफ द मार्केट फ्रॉम द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, व्हाट आर द थिंग्स दे आर वांटिंग, व्हाट आर द डिजायरिंग, तो उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे एंड देन देयर product when will launch, it will just rise, so they can get a competitive edge in the market, right? So product development should be also based upon depending on the consumers demands and needs. Brand loyalty. Consumer behavior influences brand loyalty. Positive experiences with a brand can lead to repeat purchases and consumer loyalty, impacting market share, right? भी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसने कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना पोजीशन बना लिया है, राइट? अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर, इफ यू गेट the satisfaction of particular brand, then you are likely to buy to that brand, right? So अगर consumer उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा तो he or she is setting the consumer loyalty, okay? So उसका एक मार्केट शेयर खड़ा हो गया. So consumer behavior only influences the brand loyalty, okay? Conversely, negative experience can result in decline in market presence for a particular brand. Yes, अभी कोई एक पर्टिकुलर गारमेंट्स का ऑनलाइन ये है ब्रांड है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लोगों को पसंद है, लोग खरीद रहे हैं, राइट? अभी उसने अपने मुनाफा के लिए, फॉर एग्जांपल, उसने अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में डिक्लाइन किया, तो कंज्यूमर को भी पता चल जाएगा कि कोई तो ऐसा नहीं है कि चलो खरीद रहे हैं, चलो उसके ब्रांड से हम खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छा है, चलो वी आर गोइंग टू बाय इवन इफ इट इज गिविंग बैड थिंग्स. नो,
अगर कंज्यूमर को लगेगा कि द प्रोडक्ट इज नॉट एज पर द सेटिस्फैक्शन या उनके लेवल तक नहीं है, दे विल स्टॉप यूजिंग इट. एंड वंस द कंज्यूमर गेट इन टू द आइडिया कि इसका प्रोडक्ट अभी अच्छा नहीं है, मार्केट में नहीं चलेगा, तो दे विल स्टॉप परचेजिंग इट. ओके, सो यू कैन सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर इज डिसाइडिंग कि कौन सा ब्रांड मार्केट में रहेगा. सो टू स्टे इन द competitive मार्केट, द सेलर्स और द प्रोड्यूसर्स हैव टू बिल्ड द प्रोडक्ट्स एज पर द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द consumers, and they cannot reduce the quality in order to gain profit, right? Marketing strategies. Effective marketing strategies are tailored to consumer behavior. Businesses use market research to identify target audiences, create appealing campaigns, and establish pricing strategies that resonate with consumers. Yes, marketing strategies आपके भी बहुत अच्छे होने चाहिए so that you can set your product in before others can set. How? By doing a research to identify the target audience. कौन वो आपका सामान खरीदने वाला है, कैसे आप उसको अपीलिंग करेंगे, कैंपेन कैसे करेंगे. आप हो सकता है उसका सैंपल आप घर घर में जाके एज एन एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन दे सकते हो. इन दैट केस यू कैन सी इन दिस वे यू आर बिल्डिंग अ मार्केट बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, एंड इन दैट केस यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट मोर देन द अदर्स कैन थिंक. ठीक है, सो यू कैन सी कंज्यूमर इज डिसाइडिंग व्हाट द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू इन द मार्केट, राइट? This is market segmentation. Businesses often segment the market based on consumer behavior, targeting specific demographics or psychographics. So how? This segmentation allows for more precise marketing efforts and better meeting the diverse needs of consumers. Yes. So what is they are saying? Business का क्या है, अपने segments तैयार करेंगे, कौन से market के अपने एक product को कहाँ ज़्यादा sale हो रहा है. You have to see कौन से एरिया में कौन से साइकोग्राफिक्स कौन से लोग ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा सेल करेंगे, राइट? एंड जहाँ पे नहीं हो रहा है वी विल नॉट गो दैट, एंड दैट वी हैव टू डिपेंड ऑन द डाइवर्स नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स. ओके, जहाँ पे कंज्यूमर्स वी कैन सी what the consumers are doing. If we see that the consumer is a particular place is using a particular product in a more extent than the consumers of other places, in that case those products जहाँ पे उसका सेल ज़्यादा है हम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखेंगे, और जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे उसका यूज़ कम है वहाँ पे कम लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफिक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ एक प्लेस माउंटेनियस रीजन्स, वहाँ पे वो जो यूज़ करेंगे दोज थिंग्स आर नॉट यूज बाय द प्लेन रीजन पीपल. ओके, अगेन एजुकेशन स्कूल्स एंड कॉलेज जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वी विल हैव मोर ऑफ द एजुकेशन स्टाफ एंड एवरीथिंग related to education. Okay, and schools and colleges वहाँ पे stationery shops and all will be more required. जहाँ पे school colleges है नहीं वहाँ पे हमारे stationery बिकेंगे नहीं. तो in that way we have to plan the market segmentation. हमें करना है कहाँ पे कौन सा चीज़ का सामान ज़्यादा खरीदा जा रहा है, we will sell those things there. and जहाँ पे woolen clothes in the cold areas, वहाँ पे woolen clothes whole the year sale होते हैं, लेकिन in the areas where जहाँ पे ठंडी पड़ती नहीं है तो वहाँ पे woolen clothes का sale उतना नहीं होगा. Okay, little होंगे, but that is so. In that way, we have to target the specific demographics and psychographics of the people, consumers. So consumers will decide what the market segmentation should be for being taken by the sellers, right? So diverse needs of the consumers have to be met by the sellers. Competitive landscape. Consumers' choices shape the competitive landscape. Companies need to stay attuned to consumer preferences to remain competitive, adapting their offerings and strategies stand out in the market. Yes, अभी जो भी कंपनी को ये जो अभी कंपटीशन टफ है, इस कंपटीशन लैंडस्केप में किसी को भी अगर एग्जिस्ट करना है तो दे हैव टू बी ट्यून देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर कैसा मांग रहे हैं, कौन सा चीज़ मांग रहा है. अभी फर्स्ट जब ट्राउजर्स आए थे दे वर जस्ट 1940s के जो ट्राउजर्स थे दे वर विद गैलेसेस एंड ऑल दिस थिंग्स. अभी वो ट्रेंड जाके अभी स्लिम फिट, तो दो चॉइस जो अभी गारमेंट्स तैयार कर दे हैव टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, राइट? अभी आप अगर जो 1940s में बेच रहे थे सामान वो प्रोडक्ट अभी बेचोगे, लोग नहीं खरीदेंगे. तो योर मार्केट विल या 1990s में यूज हो वो भी नहीं यूज होगा. एग्जैक्टली व्हाट इज द ट्रेंड आपको देखना है, व्हाट the consumers are buying, what is their choices, what are their preferences, क्या color shades, everything, texture, what material. तो everything you have to pay attention if you are in a garments business. तो आपको attune only in garments नहीं, अब अगर eatables में हो, आप अगर groceries में है तो you have to see what the people are taking.
तो आपको पूरा ट्रेंड को मेंटेन रखना है, आपको देखना है कंज्यूमर्स का चॉइसेस क्या है, उनके वांट्स क्या है। अभी कंज्यूमर को चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट, चीप होगा बट द क्वालिटी शुड बी हाई, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है। आप अगर क्वालिटी को डिग्रेड करोगे, ज़्यादा अमाउंट दोगे, लोग नहीं खरीदेंगे, कम अमाउंट चलेगा बट दैट टू विद हाई क्वालिटी। तो दोज ट्रेंड्स यू हैव टू टेक इनटू, कीप इन माइंड एंड मेक योर competition edge by strategically planning according to the market's demand, right? And demand is selected by the consumers itself, ठीक है, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से हमारा आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में यू हैव टू स्टे attuned with the consumer preferences. Economic impact. Consumers' behavior influences economic indicators like spending pattern, which in turn impact the overall economic health of a region or country. Yes, spending pattern. आप अगर कहीं भी जाओगे, मेट्रोज में जाओगे, वहाँ पे spending pattern is more. Many people are getting a lot of money in their hands. They have the choice of spending on their luxuries as well as not only luxuries, they are spending more than the people staying in villages where they don't have that, even if they have the money at hand, they are not interested in spending in that way. So spending pattern is also very much affected. जहाँ पे मार्केट में फैशन का ट्रेंड है, वहाँ पे फैशनेबल थिंग आइटम्स विल बी सोल्ड, बट जहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है, तो इन दैट प्लेस दोज थिंग्स विल नॉट बी सोल्ड, दे विल बी जस्ट केप्ट एंड इट विल बी डिक्रीजिंग द सेलेबल पॉइंट ऑफ दैट मार्केट. सो आपको क्या करना है, आपका मार्केट को आपको देखना है एज पर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल, स्पेंडिंग पैटर्न, लोग कैसे पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, विच इन टर्न इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ रीजन और कंट्री. ओके, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस और हेजिस्टेंसी कैन अफेक्ट मार्केट स्टेबिलिटी. यस, कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है जिसका प्रोडक्ट कैसा है नहीं है, पीपल हैव नो आइडिया, राइट, उसने लॉन्च के आगे कोई कैंपेन नहीं किया, उसने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं है, तो पीपल खरीदने के आगे हेजिट करेंगे वेदर इट विल बी गुड और बैड. ओके, सो कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के आगे यू हैव टू सी वेदर दे आर, आपको मार्केट सर्वे करना है कि वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मेट हो रहा है कि नहीं, और वेदर पीपल आर लाइकली स्पेंडिंग रेडी टू स्पेंड मनी और नॉट. आपने पहले पूरा बड़ा खर्चा कर दिया जिससे आपके मार्केट में सामान लॉन्च कर दी, लोग खरीद नहीं रहे, इट्स विल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. पहले मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी प्लानिंग पड़ेगा, वो सामान थोड़े अमाउंट में बनाना है, सो टू सी वेदर पीपल आर टेकिंग इट नॉट. ओके, और वो पैटर्न हमें देखना है, कहाँ पे लोग ज़्यादा खर्चा है वहाँ पे वो प्रोडक्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, जहाँ पे वो लोग नहीं खरीद रहे वहाँ पे नहीं लेना है, राइट. ऑफ अ रीजन और कंट्री, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस और हेजिटेंसी कैन अफेक्ट मार्केट स्टेबिलिटी. इस मार्केट में वो बंदा नहीं टिक सकेगा अगर उसका अपना कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन को वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर सका, ठीक है, तो पीपल विल हेजिटेट टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज markets. So आप देख रहे हो consumer ultimately decides what the products they want, what is the satisfaction level and what are the things which will be in the trend. तो ये सब चीज़ मार्केट का डिफाइन हो रहा है, तो मार्केट को रन करना है, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है, एग्जिट करना है, प्रॉफिट करना है, तो यू हैव टू गो बाय द कंज्यूमर्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस. In summary, we can say understanding and responding to consumer behavior are critical for businesses to thrive in the market. Market में competitive world है जहाँ पे एक साथ में लाखों लोग compete कर रहे हैं. There you have not only to exist, तो आपको सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना है, आपको वहाँ पे कंपटीशन में जीतना भी है. दैट मीन्स यू हैव टू अर्न प्रॉफिट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द बिहेवियर, राइट. कंपनीज दैट अलाइन दिस स्ट्रैटेजीज विद कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोर लाइकली टू सक्सीड एंड अडेप्ट टू डायनेमिक मार्केट कंडीशंस. यस, एंड दोज कंपनीज विच आर अलाइनिंग दियर स्ट्रैटेजीज, उनका जो प्लानिंग कर रहे हैं, बजट तैयार करिए, उनका फ्यूचर प्लानिंग जो कर रहे हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, दे आर winning the race, ठीक है. So and succeed and adapt to dynamic market conditions. Market conditions completely changing every day, now and then. So you have to be fully you have to have the information of the market, consumer behavior, consumer preferences, what are the needs, what are the satisfaction level which the consumers want from the particular product. Everything you have to be keeping in mind. The business have to expand the business or continue the business. Okay. Thank you.